will handle it. And I am also here with you if you feel any difficulties. I think today Adhikari is talking about the phonon spectra. So phonon spectra tells about the thermal stability. So first of all, earlier lectures we talked about structure and what are the lattice vectors at which structure is stable. And now phonon relating to the thermal stability. So whenever we will design a new system, computationally, then people are talking about whether the system is stable or not. Then they talk about referee most of the time ask the question whether you have checked its thermal stability or not. Right? So phonon spectrum play a very important role. And using that phonon spectrum, most of the properties, mostly other thermal properties can also be calculated. I think today you will also enjoy this, and after that there is a valedictory session after tea break. Okay. Am I audible? Okay, can you check, first of all, log into the supercomputer, all of you, please. And then make sure you have these things down there. At least there should be SCF.in file. It is same as in band calculation yesterday and dust calculation. And Solarum file may be there. And other files, the most important file for phonon is ps.in. Okay, let me go to that file and explain you what the meanings are there. In this file, this is not very big file basically. The first line which you have seen is the comment phonon of silicon in diamond structure. This line will not do anything, it is just a comment line and information. From the second line, the block started input pH, and then this is the threshold for phonon calculation in SCF. It will do repeatedly SCF calculation. Okay, so there is the threshold which is smaller, many orders of magnitude smaller than SCF calculation. Okay, here we are using 10 to the power minus 12, and in generally for SCF we were using 10 to the power minus 8. The default value is 10 to the power minus 6. And for this, 12 is the default value. Okay, minus 12 is the default value. So I am putting the default value, but sometimes this may not be sufficient, and you have to go minus 13 or minus 14 or even minus 15. So we can go up to there. That is the tradition and practice mostly. And mass of silicon you have to define, because this is the only one mass system. We are using silicon. So mass 1 refers to the first atom, and this is the atomic weight of silicon, 28.085. And this file si.dyn stores the dynamical matrix. That you need to understand a little bit theory of that part. Dynamical matrix. Basically, dynamical matrix is the total energy versus displacement, the double derivative of that matrix. Okay. An output directory which is dot slash means right here, and LDIS is equal to true is required, in which you are calculating whole phonon spectrum in Q grid. It is called Q grid, not K grid. We tell it a Q grid. NQ1, NQ2, NQ3, because it is a cubical system, so all the values are 4, 4, 4. They must be at least equal. For computational quickness, you can adopt that 2, 2, 2 also can be written, but that is 2 cores. So in order to get more accurate value, actually, this is the converged value 4, 4, 4 Q grid. Okay, and the next flag which is just above is reduce IO is equal to true is almost compulsory in many phonon calculations. Otherwise,
it will dump so many data on the hard drive, and calculation is a secondary part than I/O. I/O intensive means input output. Reading and writing on the hard drive is very intensive when you do not include this flag. Okay, so this is a very important flag for technical perspective. Otherwise, we are so many people are simultaneously submitting job in supercomputer, and I/O will not handle this much intensive it is. So we have to do that, and it is particularly important in when you run Phonon in your laptop, okay, or in unstable desktop where the line might frequently go, power outage, and then that flag should not be here again, because you cannot resume the calculation when you do this kind of calculation. But in supercomputer, there is no such possibility, so we are very confident that there will be no power outage and nothing will happen, and calculation will finish in a one shot. Electrical. Okay, great. Electrical, one single calculation, it will finish from start to finish. There will be no interruption. Then you put this reduce I/O flag. Otherwise, the default value is false, and that means it will generate so many data and write on the hard drive, and because it is easy to resume later on for the interrupted. So this is the output files here. And let's go to what is called GitHub page. What is there? In GitHub page, let's go to the Phonon folder. Yeah, it's visible. Yeah. So here also you will have the same file, and band.plot I need to, it is for band, I have to modify this script, and Phonon there you can do two things. You can either check the phonon density of state is also there, and phonon band also can be done like electronic band. Okay. The order of hierarchy is like this. First, you run the SCF input file, pwx command, and then run ph.in file with ph.x command, or maybe if I show you the run.slarm, then it will be more clear. Let me show you run.slarm file. Okay. And there is one reference also in ResearchGate. Okay, you can take this reference also if you want to read further on Phonon calculation. You can check this reference. First, what I am doing is all other part is the green text is as usual slarm command, and some are comment. Like follow this article is a comment. Okay, but yes batch -t 60 is a actual slarm instruction that I want to calculate this calculation for 1 hour. This is actually slarm command, but below that it is comment. Until here it is comment, and I am loading Quantum Espresso 7, and then run the calculation is also comment line, and here all are instruction. MPI run -np12. So we are running using more cores here. Okay, yes. On previous we were using only 4 cores, but this time little bit more cores are here. 3 times more, and number of K point I am using 2 because one CPU handle is 2 K points, and one that portion will take care 6 plane wave part. So 12 cores are utilized this way, and the product of 6 and 2 is 12, which is here. So this should match. And the most intensive calculation is actually Phonon. SCF is not that intensive, so I am using this calculation like this. And other calculation basically does not require much resource. Even you can pull your data and compute on the local laptop also. Okay, but however I am doing in supercomputer this thing, but it is not mandatory. For now, what you can do is you can comment at least this line, and DOS.in is okay, DOS.in is okay. Let us do up to DOS, and band
what I am trying to do is, there are many ways of plotting phonon bands. One is reduced reduced Q grid, in which you can plot your band from gamma point to 100 point, gamma point to 111, that means corner of the plane, okay, and gamma point to 111, that means corner of the body corner of the cube, okay. Plane corner is 110, body corner is 111 and the cube, okay. So I have made 3 calculations, that is in my laptop, another laptop, and I am working in a different machine. So that way we have to do the calculations, and I will handle that in a separately. So for now you can comment the last line. Let us not plot this line, instead do only up to this part. First we will calculate SCF calculation in the first line, and then we will do the phonon calculation. This is the most time consuming part of the calculation, and this will be done in 3 seconds or 5 seconds at most, and this is also done in less than a minute, okay. So your calculation time is around 10 minutes or a little 12 minutes. Within 12 minutes one calculation will finish, and if there is others calculation, a regular user, I will cancel those calculations and reserve the machine for you. So maximum 5 calculation will run, okay, at once. And I have seen yesterday that 37 and 39 were already done this calculation. So I will not submit the job, but you can submit, because it is useless for me to submit the job. So you can submit the job, but for that you have to comment the run.solaram file, okay. I will show you the last comment, the last line of your put a hash sign in front of that, okay, and you can submit the job. So this is how you can submit the job. Let me see how many of you have submitted. Yeah, HEMA 2 is running good, and there are two nodes busy. I will cancel that jobs. Let me do that in a moment. Yes cancel is a command to cancel the job, okay. By the way, you cannot cancel others job, okay, but as a root I can cancel everyone's job if I want. Now right now I am cancelling this 6753 job, which is more than 30 hours and taking 2 nodes. So because of resource I am cancelling that job, and first I will hold, sorry, yes, control, let me put some one on run calculation to hold. So I am putting those queued calculation, which is taking 5 nodes actually. They are also doing phonon, okay. Kumar, Narayan and Maheshgiri, they are from Tribhuvan University. So I am putting those 2 calculation hold so that it will not run. So, and I will cancel that, or I can put hold also. I can suspend that also. Let us not cancel, but instead suspend that calculation for a while. Only root user can do this, okay. Normal user cannot control others' job. So now there should be 5 calculations running. Let me check. Yeah, 5 of you are running, and HEMA 2, HEMA 38, HEMA 21, 16 and 35, and others will remain in queue, okay, until these 5 finish. It takes around 10 to 12 minutes, I told you that already. And this status yes means suspend, okay. Now you have seen new status because of the new kind of command here. So yes refers to suspend. I do not like to cancel the running job, but I am putting that calculation as is, and
releasing your calculation to the same node. This is called suspending. And PD means pending, you already know this. Yeah. So it takes time. And in the meantime, what I will do is, I have to do something. Let me check. I will not stay on the root terminal, that is very dangerous. I need to check where I might have done that part for phonons. Maybe in my laptop, let me check. Kuldeep, where is my bag? Behind, okay. I have already made those input files for band calculation, so that I can show you. Is it my bag? No, it is not mine. It is Sar's bag. Oh yes, that is mine. My laptop. Okay. Once at least two of your calculation will finish, then we will start the plotting of phonon density of state, okay, because that has been already finished within this calculation. And once the PS is finished, others are just few second calculation. Like band calculation and dust calculation just take a few seconds only. So all of you can submit the phonon jobs now, okay, but comment the last line on a round.slurm file. You are also trying. Yes, sir. Okay. What is your ID? Or you are using your own one? This block is a little bit light is gone at our workstation, then we cannot. Yeah, yes. So that's why I cleared that when this tag needed and when not needed. Then the recovery will not work. Yeah, recovery will not work. We can try to log on to system. Yeah. That is a big rescue in supercomputer. Because so many people submit jobs, and then I/O is extremely heavy in that case. अच्छा इसको पॉज करके करना फिर के लिए ना. And you can download these files from GitHub in a moment. But for now, you are okay. Continue on your work. Yes. Okay, now can you
listen for a while, just 2 minutes. I will take your 2 minutes. Now I uploaded 3 files on the GitHub repository for Phonon. band_100.in, band_110.in, and band_111.in. So let us see first the 100 file. How it looks like. And you need very little flags basically. Input ASR is equal to ASR stands for acoustic sum rule. Okay, if you are not familiar, you can read the journal articles regarding acoustic sum rules. And mass is there for silicon. And FLRC file is a force constant file which is produced when you run Q2R.x with appropriate input there. Okay. And then FLFreq is where your calculated frequency will be stored. So I am on the same fashion with _100, okay, so that I can later on understand what is this, on which direction it is there. And Q in band form is equal to true is required, because I will not manually write all those Q points, but Quantum Espresso will write just because I will give the how many points there is in the middle. Okay, 30 points. And here is 2. 2 means one is gamma point, another is 100 point. Basically 100 is half 00 in fact. So from 100 is a gamma point, and I am traveling to the 100 point here. 111 vector, or let us say this is 111 vector anyway, and I have to go only up to the middle. That will consider full. So in the same another file which is band_110, then here is the 0.5. This value is 0.5. 0, first vector is 000, second vector is 0.5.50. Okay, you can check yourself. And in the third case, the first vector is same and all other part is same. The second vector is 0.5, 0.5, 0.5. Okay, so we are scanning the phonon band along 3 different directions from gamma point. One is along the x-axis, one is along the line joining 45 degree angle to the x-axis, that is in a xy plane, so, and another is along the body diagonal or towards the corner, from the center of the reciprocal zone to the corner of the reciprocal zone. Okay, that Brillouin zone, corner of the Brillouin zone. So that is 000, 0.5, 0.5, 0.5. Okay, so this is how I am scanning 3 values. And you can manually also copy and paste this line. Okay, you can copy this text, and because you don't need to reclone. And what you can do is, let me go to supercomputer terminal anyway, and in this terminal I am in different location. I will come back to day3 folder, or you can make day folder, whatever. So in this folder, go to Phonon, which you may not need to clone. Now what you can do is, instead of just band.in, make band_100.in. Okay, this is how you can make, and then paste the content that you just copied. Okay, so this also can be done. It is all up to you. And no, I don't like this method. You can make a different folder called day4 and then reclone the repo for the Phonon purpose. Okay, so that is also possible. It is up to you, whichever you feel comfortable. Make the easiest way is make day4 folder and then reclone, git clone again that link. Okay, and Phonon will be, now you have updated Phonon folder this way. It is all up to you. Okay, and then the next part is how to calculate the Phonon, how to actually visualize. But like yesterday, I will visualize interactively. Okay, I have left that part very all up to you, because at least try make one script for GNU plot, because you have seen so many GNU plot scripts for ALAT, ECOT, DOS, band, and K points. Okay, so many scripts you have already seen using GNU plot. So you can take idea from there and make your script for
phonon DOS, okay, and phonon band also. I am not doing that. Let me be a little bit. Okay, now I will go to my old folder of MSL where I have finished my phonon calculation accordingly these things. So first I will show you the DOS calculation is also finished in my case, and let me do LS. So for the DOS calculation, what you can do is DOS.out is there. Where is DOS dot? Maddyne. Yeah, possibly this is the file maddyne.freak.gp. Oh, anyway, one thing I have to show you, q2r.in. Okay, what is the content of q2r.in? Let me show that. Q2R means you are converting your data from reciprocal space to real space. Q is a reciprocal space and R is a real space. Okay, so Q2R. In Q2R, all you need is the dyne file that was in the ps.in si.dyne file, and ZASR means acoustic sum rule is simple. Right now the popular use is either simple or crystal. You can use both, okay, and you can try both basically. And then force constant file. This file is used in another calculation like in DOS and phonon band. Okay, this is the file, input file for other purpose beyond Q2R calculations. And I am using this file in DOS.in also and band.in also. You already seen this thing. So this is the part of Q2R. Q2R actually does is translate the frequency information from reciprocal space to real space. Okay, and it will generate a force constant file. So now in order to DOS, let me check maddyne.freq.gp file. Yes, so this is the phonon, maybe not DOS, I think. Anyway, let me see. It may be incorrect, but anyway, let me see, or overwritten. Yes, it is phonon DOS, right? Yes. Okay, good. In this file, the X column, the first column is actually phonon frequency, and second column is states per frequency. Okay, so let us plot this interactively. I am using interactive plot. Okay, I will not use any fancy thing here. Plot. The file was this maddyne.freak.plot is my file. Let me paste that file here using 1:2. In a moment, a graph will pop out. I think something is wrong here. Okay, looks like this is not correct. Okay, better use the current calculation from you, some of you. At least band can be seen, phonon bands can be seen. Let us see phonon bands along from this file. Okay. Now I will first tell you what is the content of that file, and then we will go on plotting. And this file has the first column is the Q point vector, and here the Q point starts from 0 and ends to 0.5. Okay, that is what we have written in our band_100.in file. So this is perfectly according. These three columns are acoustic phonons. Okay, you should study Kittel book also to understand this. And these are the optical modes. In a crystal,
Suppose this is a diatomic lattice because we are using 2 atoms per unit cell. That means it is a diatomic basis, and we should have 6 bands of phonons. Okay, 3 for acoustic. Always there is 3 bands for acoustic, and among those 3, 2 are the transverse acoustic and 1 is longitudinal acoustic. Let me tell you how that works, what I am talking. Okay, can you see this phone? My purpose is not to show phone. Okay, physics, so to physics. Suppose you strike this phone in the middle, then wave will propagate along this direction also, along this direction also. Okay, but your strike is towards the transverse direction to the surface of this phone, perpendicular. You are perpendicular striking on the phone surface, then it will produce a sound. That sound will travel along x-axis of the phone, that means along the right side, and it will go along the top vertical line also, that is along the y-axis, and the frequency will be heard on the back side of the phone also. That is called longitudinal direction. Okay, that is the longitudinal direction. When I hit this plate, let's say plate, it is not a phone for now. When I hit this plate perpendicular, maybe I should go on the brighter side, on the there. It is a great physics. Okay, let me take not phone, take a laptop. This is a big object. Can you see all of this laptop? Okay. When you hit like this, maybe sound is not that hard. Okay? The sound is hard, or you can hit on the back side also. You can hear the sound, right? But I am hitting it perpendicular on the surface. And sound will propagate on the x-axis, this direction. Sound will propagate on the y-axis. These 2 modes are called transverse acoustic mode. That means the velocity will be slightly lower on this mode because your hitting direction is different than the wave propagation direction. And when you hit here and listen on the back, you will hear that more quickly because the sound wave is by compression and rarefaction. So it will propagate faster in the direction of the strike. That is called the longitudinal mode. So vibration on these kind of things, you will expect at least 3 modes. They are called acoustic modes, and in those 3, 2 are transverse and 1 is longitudinal. Okay, and then in the file here, I have also data here on the board. These 2 columns, if you check, they are identical because they are along x and y direction. Motion along the velocity of sound, they will anyway correspond later on. You see, same value, but this column is different. And the values are higher also. Look at here. Okay? This is the longitudinal mode of acoustic branch. And these 2 branches are transverse branch of acoustic. And remaining, whatever remaining is all the optical modes. Okay? These 3, because of 2 atoms, we have 6 here. There is a 3n modes always, and 3n minus 3 is the optical modes, and 3 modes are always acoustic. In metal, for example, this is semiconductor. In metal, we have only 3 modes. All are acoustics. Because metal, in the metal crystal, there is 1 atom per unit cell. Okay, always. If you calculate, suppose we are not doing, but if you do aluminum, gold, or whatever iron, then there is always 1 single atom per crystal, per unit cell. And these columns will be missing there. Only these 3 columns will be there, okay, in metal case. So this is a non-metal, and silicon, it has 2 atom basis. Therefore, these 2 columns are for transverse acoustic, and this 3rd column is longitudinal acoustic. Okay, this information is written in Kittal also and Espresso and Morbin also. But you have to, you may read now with a different perspective that, oh yes, this is what it is. Now I have shown you practically, means numerically, okay, that kind of modes directly on the calculation of from the GFT result. So GFT result is very accurate therefore.
This is how it works. Okay, now let us plot at least. How to plot is this, I will show you, and you can make a script, okay, on the reference of this plot. First let me see the GP file. I just want to see the GP file so that the terminal will not be that much crowded. Okay, so I have this file, and particularly I am plotting only this file today, and I showed you it has 6 branches, right? 3 branches are for acoustic and 3 branches are optical modes. So let us plot this, how to plot, and you can just collect the commands what I typed here and make a script later on. But what you are plotting is that a silicon file. You can label it also, by the way. I will show you how to label. TI means title of the line. A for acoustic, okay? Acoustic transverse 1. And for optical, I will write O. And if you are a real genius, then you can put that in a curly bracket for T1. Yes. So others, I don't need to type that much. I can just do. Here I will type 2, but this is also acoustic and transverse. And I will change the column number to 3. Okay. Here I will change the column number 3. And plot command is not required. Plot command is only once. Okay. Now you can just keep on. Now this is the longitudinal acoustic. So put L there and L1, or 1 is also not required because there is only one. Acoustic but longitudinal branch, and that is the column 4. Okay, you can keep doing this. And now the optical will start. For optical, I will say only O1, O2, O3. Okay. If there is only one character, the curly bracket is not required. O1, and I will change the column to 5. Now I will do O2, optical 2, and I will change the column to 6. If I do mistake, catch me, okay? And this is the last one, so I don't need to slash there. Optical, third branch of optical, and it is the 7th column. So this information you have to embed on your GNU plot script, okay, later on. Right now I am typing on the terminal directly, but you can collect this script and dump on a file so that it will plot the phone on band. Let's see how it works, whether it works or not, first of all. Yes, good. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, I'm बहुत ठीक हूँ sir. going fine. हाँ. Okay, now you can see. Although it is, I will increase the line width. Okay, in next time. The lowest green line is the actually 2 modes. Acoustic transverse. There are 2 modes and they are overlapped. I showed you in the data also, they are same. And the lowest, that blue line, is the acoustic longitudinal mode. It has higher frequency. You can also notice that. I told you that will happen. And other 3 branches on the top are the optical branches. The lower 2 are optical transverse, and the last one is optical longitudinal. So this is how we got 6 branches in silicon crystal. This is the phonons. And in the same way, your data is already there. Okay, I can collect this now because I already typed with so much effort right into the terminal. You can collect this and dump in a file. Let's say, let me
and now I am quitting the GNU plot. Let me see how many plot file I have. If not, then I have to create a brand new. Okay, band.plot is already there, luckily, but I have to modify this. Okay, let me check. Or you can do like this. Change that file band.plot to a band100.plot, so that you will notice that this corresponds to this direction. Okay, band_100.plot. Sorry, this way. So you are copying. Now edit that file and embed the script. So if not, then we have to do. So Yaks range is just 0.5 that we already saw. It is made for different provision. 0.5. Value of Yaks goes from 0 to 0.5, and Yaks min is 0. Minus y, I write minus 0. I don't know right now. Anyway. Okay, there are. Yes. Line width is 2. ELS is line width 2. Yes, okay, line width 2, good. And I don't need so many. Y level is energy, X level is symbol, and X gamma to X. Okay, let me delete all other lines are not required here. And you can set level at 0.5 X, and I think that is repeated. Let's delete it. Okay, gamma to X. We are plotting the band from gamma to X. Only 2 points are there, okay? And you know that this command already here. I don't need to retype. It is very good. And now the name is dispersion there. So what I will do is I will also make this like this, so that it will be easy to follow which dispersion belongs to on which direction. Let me change on the set output also. Yes. So I think I have done y naught is 2 is okay, let it be 2. Set arrow. Arrow is not required right now. A border is 2. Border, I don't like that thick border. Let's make it a smaller border. Okay, now I have only black is for those 2 lines, and blue, forest green, all others are forest green. Okay, now let's run this file using GNU plot. GNU plot plot band_100.plot. Yes, now the file is there. Now I will open it graphically because it is a small file and can be done graphically. You already know this trick, how to copy your file, open your file graphically. SFTP. Okay, now go to your folder, Himachal folder. There you will see a phone folder somewhere here. And you will see dispersion _100.pdf. Okay, this is the actual file that we recently produced. Yes. So this is it. In this file, we are going from gamma to gamma. I have to further push that symbol, okay, because 2 is not enough. So you might write 5 there instead of 2 later on, not right now. So the black line, which is here, this line, this is actually 2 lines, 2 acoustic, because they are perfectly overlapping along this direction. And in some other direction, they will not overlap, okay. We will check that later on. And this is the acoustic, longitudinal, and all others are optical modes, okay. This is how we do the phonon. Now let us see 1 direction or
111 direction also we can see, because I hope your calculation is there or not there, but anyway it will be in a moment later on. So let's do the plot of I have all the data, so let me change that GNU plot script. I just have to change the GNU plot script now, okay? I don't need to do anything. CP BAND underscore 100 dot PLOT BAND underscore 110 dot. Now I made this file and I need to slightly change this file accordingly. So on this direction, what I have to do is I will change this output file also. I need to change, and finally range will also change. I need to do 11 means how much that will be? Little less than 0.707, somehow like this. Okay, that is okay. And 2 is not enough. We have already seen this. So I made it 5. I am pushing little down, and other I don't need to do anything. And instead of X, let's say different symbol. Let's say 110. I am just putting a symbol, okay? That is the direction. Remember, 110 symbol. It is not X anyway. I don't know the name at present, so I just put 110. And other things you have to do freak. What was the file name? I think I have changed the file name also. SI underscore there is. SI underscore is here. Otherwise, you might risk plotting the same file. Okay, be very careful here. It might be like this. If not, then we need to check and see. 110. So it is good that I am working with you. Okay, right? Very live. That way you can get more insight what is being done. It is no more a black box now. And Jagadish sir? Yes. I am showing them right Yes. in front of them what I am actually All the doing. internal components. And as Arun sir is telling, nobody tells you of this detail Yes, level. practically it is. And you are with a very elite team of computational physicists of Himachal. स्कूल में जब आप छोटी क्लासेस में जाते होंगे तो आई डोंट नो मॉडर्न टाइम में तो बहुत अलग अलग तरह के वो आ गए हैं. पहले एक लकड़ी की फट्टी होती थी, है ना, और उस पे आपको लिखना सिखाया जाता था. एक आपको डॉट्स दिए जाते थे, उनको कनेक्ट करना है आपने. आजकल शायद डॉट्स आ गए हैं ना. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस. आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाई जा रही है और अधिकारी सर आपका जैसे हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं ना. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग ही इज ट्राइंग टू डू. दैट ओके, आई एम डूइंग इट अलोंग विद यू एंड यू कैन ऑल्सो डू इट योर वे. तो बाद में फिर आपको और प्रैक्टिस करोगे तो और बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हो. Okay. Now you can refresh your this terminal. सर ये जो डेटा आता है हमारा फोनो डिस्पर्शन का, एक मास्टर फाइल आ जाती है जब आप कैलकुलेट करते हो. उससे हम ये डायरेक्शन सिर्फ प्लॉटिंग में चेंज कर रहे हैं या नहीं, डेटा किस फाइल में है हमारा? डेटा वही SI अंडरस्कोर वाला फाइल में है सर. हाँ हाँ. जैसे कि अच्छा, वो डायरेक्शन के मुताबिक डिफरेंट बनाया मैंने. सॉरी, क्वांटम एस्प्रेसो अलग अलग डायरेक्शन में खुद ही दे देता है. नहीं, ये डिफरेंट फाइल्स है सर. बैंड का ये जो है ना 3 फाइल्स है. कौन सी है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. अच्छा, दीस आर डिफरेंट फाइल्स. हाँ, अच्छा, ये वाला फाइल है सर. हम इसका कैलकुलेशंस कर रहे थे तो हमने सबके आउटपुट बना लिए. हाँ, सब इनपुट अलग अलग इनपुट बना लिया फाइल है. ओके, अब हम इसको देखेंगे कि ये डिस्पर्सन 110 वाला फाइल देखना है. अब हमको देख लीजिए. इसमें ना यक्स both transverse acoustic modes are different in this file. Transverse acoustic modes are only equal when you are traveling along x-axis or along y-axis. Now in this case you are 45 degree with x-axis because you are on the 1 point.
Okay, so that means 45 to the x-axis, or you can say 45 to the y-axis. That is why the velocity is different for two lines. So could you visualize those transverse modes? आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं सर? Yes, anyone? क्यूब की आपने डायरेक्शंस बनाई होंगी, राइट? 100 डायरेक्शन क्यूबिक के लिए बनाई होगी ना, जब आपको क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाई होगी. Then you have 110 डायरेक्शन, राइट? 110 डायरेक्शन माना आप एक्स क्यूब अगर देखते हो तो उसका किसी फेस के डायगोनल के अलॉन्ग 110 डायरेक्शन वैसी होती है. आई होप यू रिमेंबर दैट. तो अगर आपकी जो वेव है 110 डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, किसी भी डायरेक्शन में इन जनरल अगर ट्रैवल कर रही है, तो उसके तीन प्रकार के मोड्स पॉसिबल हैं. टू विल बी ट्रांसवर्स, मींस इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, देन क्या होता है ट्रांसवर्स मोड. अगर वेलोसिटी इधर को है, वेव वेक्टर इधर को है, तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वेव बनेगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो दो प्रकार के ट्रांसवर्स मोड होंगे. अगर इधर को जा रही है तो एक तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अगर एक्स डायरेक्शन में वेव है तो एक केस में ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी अलोंग वाई, एक में अलोंग जेड. तो जो दो ट्रांसवर्स मोड सर बात कर रहे हैं वो तभी डीजनरेट होंगे जब आपकी वेव 100 डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. और एक लॉन्गिट्यूडिनल है, वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा. लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इधर कोई वेलोसिटी है और ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में है, लॉन्गिट्यूडिनल मोड. बट व्हेन यू इन ए क्रिस्टल गो अलोंग 110 डायरेक्शन, then those two transverse modes are no longer degenerate. Now you can see there are two different curves. ये जो black color की सर ने दिखाई हुई हैं वो different है, overlapping नहीं है. माना they are not degenerate now. Degenerate क्या होता है? Same energy level होंगे, same frequency के लिए. तो यहाँ पे आप देखोगे 110 डायरेक्शन में वो ट्रांसवर्स मोड्स भी डीजनरेट नहीं रहे हैं, एंड लॉन्गिट्यूडिनल तो डेफिनेटली पहले से ही नहीं था. सो कुड यू विजुअलाइज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू सी एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट क्लास में भी हम बात कर रहे थे, बैंड स्ट्रक्चर इज व्हाट? एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वेव वेक्टर. ठीक है, वेव वेक्टर. और यहां पे आप क्या देख रहे हो? एनर्जी इज समथिंग लाइक यू नो एच क्रॉस ओमेगा. सो अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेव वेक्टर भी बोल सकते हो, अगर एच क्रॉस डिवाइड कर दोगे, ओमेगा वर्सेस के. तो दिस इज नाउ एनर्जी वर्सेस के. यहाँ पे आपका के ही है. ये कौन सी एनर्जी है? हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द बैंड स्ट्रक्चर? यहाँ वहां पे भी एनर्जी वर्सेस के था, यहाँ पे भी एनर्जी वर्सेस के है. कॉमन कंफ्यूजन होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस आपको दिमाग में आते हैं. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोनोन्स, एटॉमिक वाइब्रेशंस. ये कौन सी एनर्जी है? एटॉमिक वाइब्रेशन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है, दीज आर दोज एनर्जीज. और ई वर्सेस के जो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स. ठीक है, तो ये फोनोनिक एनर्जी स्टेट्स हैं. दीज आर फोनोन डिस्पर्शंस. जैसे कि सर ने शुरू में बोला होगा कि आज हम फोनोन डिस्पर्शन कैलकुलेट करेंगे, है ना. तो देख हम ब्रिलियंट जोन में ही रहे हैं कि अच्छा फोनोन के लिए ई वर्सेस के कैसा होगा. देन दिस हैज अ लॉट ऑफ. कल मैंने आपको एक स्पेसिफिक हीट वाला प्लॉट दिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा. स्पेसिफिक हीट एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिखाया था. तो वंस यू नो दीज फोनोन डिस्पर्शंस, गो टू किटल्स बुक. उसमें एक चैप्टर है, आई थिंक 4th या 5th कुछ ऐसा जैसा, थर्ड और फोर्थ, ऐसा कुछ 3rd या 4th है आई थिंक. तो वहां पे उसने स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फोनोन डिस्पर्शन से, डिबाई मॉडल वगैरह वो सब वहां पे दिखाया हुआ है. डिबाई मॉडल अगेन इज अ टॉय मॉडल, बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल है. देयर यू टेक ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, लीनियर डिपेंडेंस लेते हो आप. ठीक है, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के इज क्लोज टू गामा पॉइंट. For smaller values of K, that model is okay. But real material के लिए जब आपको करना है specific heat, तो Debye model भी sufficient नहीं होगा. You have to go to the generalized phonon dispersions. तो किटल में जब बताया गया है वहां पे उसने वही कहा है, ओमेगा वर्सेस के यदि पता है तो वहां से आप किस तरह से एक फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हो. There are other many things which can be predicted from these curves, but one physically measurable property which is say specific heat can be obtained from these graphs. तो हम क्या करना चाह रहे थे शुरू में कि भाई जो भी कोई भी सिस्टम इन नेचर है उसके अंदर का साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, what decides the behavior of the system. So these are the things which actually decides
हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव. तो इसलिए हमें ये फंडामेंटल चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं. क्लियर? ओके, अब एक टेक्निकल काम करते हैं. हाँ. और जो मैंने अभी प्लॉट स्क्रिप्ट बनाए हैं तीनों, दोनों तो हो गया और एक अभी बनाना बाकी है इसमें. हाँ. जैसे कि उसको भी 110 111. हाँ. तो आप अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं कि E वर्सेस K कैसे वेरी करेगा. नेक्स्ट टाइम क्या देखेंगे आप कि अच्छा व्हाट इफ द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग 111 डायरेक्शन, तो E वर्सेस K कैसा होगा, मतलब फोनोन की एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर कैसा होगा. Okay. Now let us edit this, the last line here, last file. अब तो पता आया होगा कि ये फाइल कैसे बनाना है, ये GNU प्लॉट वाला स्क्रिप्ट भी क्या क्या होता है इसके अंदर. ये ना थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका करीबन 1 से भी ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से. कितना है ये कहाँ से आएगा? लेंथ से, कि फाइनल लेंथ कितनी होनी चाहिए उस लेंथ की. जैसे 100 में जाएंगे तो लेंथ कम होगी, डायगोनल के लॉन्ग देखोगे थोड़ी सी ज्यादा होगी, जो सर 0.707 बोले थे. और एक क्यूब के मास्टर डायगोनल मतलब एक कॉर्नर से दूसरे 111 डायरेक्शन में जाओगे तो और भी लंबा होगा वो. हाँ. जैसे इस रूम में आप ये लेंथ लेंगे तो ये सबसे कम होगी. इस फ्लोर में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में जाएंगे दैट इज लाइक 110, तो वो थोड़ी ज्यादा लंबी होगी. बट उस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर में जाओगे तो वो सबसे लंबी होगी, राइट, लेंथ. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो हियर. और you can calculate 1 plus 1 square plus 1 square plus 1 square square root. Square root of 3 is Square root 3 आ 1.7. जाएगा वो. 1.7. सिंपल बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. 1.732. Yeah, I think that is the value here. Let me correct in up also. You know, right? How much is root 3? All of you? Yeah. 1.732. If I am not correct, correct me, okay? So possibly, yeah, just I have to change the file name here, and this one, and then here. It is little. So while playing with this file, I already created cooked rice for you, okay? It is all up to you. Bring a plate and then eat. So rice is cooked now. अधिकारी सर, what if we remove this exclamation mark? उसका फर्क पड़ता है कुछ? या ये किसमें mandatory है? हाँ, इसमें लास्ट 2 लाइन में. हाँ. हाँ, वो मैंडेटरी है सर, ऐसा मैं देखा था. अच्छा, फॉर्मेट ही वैसा है उसका. हाँ, ठीक नहीं, है. ये हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट 2 लाइन के बारे में बता देता हूँ मैं. हाँ. वो असल में GNU प्लॉट के कमांड है नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो लिनक्स टर्मिनल का इंस्ट्रक्शन है. ओके. हम GNU प्लॉट के अंदर होते हुए भी हाँ. टर्मिनल का कमांड यूज कर सकते हैं. उसके लिए आपको अच्छा, एक्सक्लेमेशन साइन exclamation डालना होगा आगे. ठीक है, ठीक है. उसका अच्छा, कन्वर्ट फिर एक ही कमांड में कर देगा. हाँ, convert. हाँ. Otherwise you have to manually do it. हाँ, नहीं तो मैनुअली फिर दोबारा कमांड डालना पड़ेगा. इसीलिए मैंने GNU प्लॉट के स्क्रिप्ट के अंदर ही ये दोनों लिनक्स कमांड लगा दिए. Conversion भी डाल दिया है. इसका बात ये है. Okay. अब देखते हैं इसको भी बना के कैसा आता है. GNU plot band underscore 111 dot plot. Okay, so it will render the another plot. Now you have to refresh your browser, in a supercomputer browser essentially, and you will see another PDF file here. This version 111.pdf. Here is the file. Let me open it. अच्छा, ये तो कुछ थोड़ा छोटा आ गया, पता नहीं क्या बात है. अच्छा, ज़्यादा हो गया लेंथ इसलिए. चलो कोई नहीं. हाँ. अब इसमें ना फिर वो एक ही आ गया, डिजेनरेसी लिफ्टेड नहीं हुआ है इसमें, डिजेनरेसी बन गया है. एकस्टिक्स ट्रांसवर्स एकस्टिक का और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूड का भी, ऑप्टिकल का भी बन गया. और जो ए वाला गैप है ना, इसको स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं लोटो गैप. लोटो मीन्स longitudinal optical and longitudinal acoustic. LOTA. No. Okay. Transverse Acoustic. अच्छा, maybe
अच्छा वो इसमें होता है सर, गामा में होता है, ये इसमें नहीं है लोटो गैप। जब ये तीनों लाइन, ये ऊपर के 3 लाइन्स है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट में मिल गया ना, इसका मतलब है कि ये मटेरियल पोलर नहीं है। अगर मटेरियल पोलर होगा तो इधर कुछ गैप दिखेगा गामा में, ये ऑप्टिकल ब्रांच में। और एकस्टिक्स का चक्कर ये है कि सभी आशीष का है सर। अब एकस्टिक्स में ना एक बात सब में कॉमन है कि वो गामा में 0 होना ही है। एकस्टिक्स ब्रांच, सभी ब्रांच, तीनों ब्रांच गामा में 0 होना है। लेकिन ऑप्टिकल ब्रांच क्या होता है, गामा में 0 नहीं होता है। कभी कभार उसमें ऑप्टिकल एकस्टिक्स और ऑप्टिकल लॉन्गिट्यूडनल में थोड़ा गैप भी दिखता है, उसको हम लोटो गैप बोलते हैं। लोटो गैप इस वजह से होता है कि मटेरियल पोलर हो। अच्छा, मैं थोड़ी देर, अब मेरा ट्रेन का भी टिकट बुकिंग कराना है जाने के लिए, थोड़ी देर में रुकता हूँ यहीं। तब तक आप Now I started recording again. This recording session is also available to you for your reference. And do not post on social medias, okay, these things. It is your personal available. Only Arun Sal will host this in his YouTube channel. Okay. So what I am going to do is, in the Himachal folder, what you can do is, you can make one folder called GAN. That is for gallium nitride. How do we make folder in Linux? mkdir command. mkdir GAN gallium nitride. This is how I made the folder gallium nitride. Okay. All you have to do is copy this content from other files. Suppose you have their volume folder. Do I have volume folder here? Oh no, I am in old location. Let me go to the new location. अच्छा, इसी में बनाते हैं। इसमें वॉल्यूम होगा नहीं, लगता है ये पुराना है। फिर तो ऐसा करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम इधर है, कोई बात नहीं, चलो वॉल्यूम मिल गया। इसमें बनाते हैं। एक गैलियम नाइट्राइड का फोल्डर तो सभी लिए बना लिए अभी, है ना। अब क्या है कि वॉल्यूम फोल्डर के अंदर उसका फाइल है, इनपुट फाइल है हमारा, गैलियम नाइट्राइड का फाइल है, और उसको थोड़ा गौर से देखते हैं। अभी इसमें ना ज़्यादा सारे हैं, लेकिन वो क्लोजेस्ट पिकअप करेंगे हम, क्योंकि अभी हमने ऑप्टिमाइज तो किया है वॉल्यूम, लेकिन देखना है कौन सा है। ऐसा ही देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें देखेंगे किस में है सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल। आप भी देखते रहिए अपने फोल्डर में। 24 ए लगता है मेरे को, है ना। ए वाला एनर्जी सबसे लोएस्ट एनर्जी है इसमें, ठीक है। और ये कौन सा है, 13th लाइन है, मीन्स we are starting from 0. So 12th, CF12 is the correct input file for this purpose, okay. So you understand right here. We decided that without any fitting, okay. This is, here I am not fitting cubic SP line. It is a very rough estimate. That's why this is the lowest energy. Sorry. Yes. 6.4. हाँ, ये वाला है ना, ये वाला सबसे लोएस्ट एनर्जी का है। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन नंबर है 13th, इधर दिखा रहा है 13th लाइन में है ये एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, या CF12 को लेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है उधर, और उसी को मानेंगे कि ये ऑप्टिमाइज लैटिस कांस्टेंट्स है। इसमें फिटिंग नहीं करे हैं हम, और इसको ले लेते हैं। ये वाला इनपुट फाइल को हम SCF बनाएंगे और उधर गैलियम नाइट्राइड में लेके जाएंगे इसको, ठीक है। चला गया है एक फाइल, एक तो हो गया है ना।
अब हम पी एच डॉट इनपुट को तो उधर से ही लेंगे, फोन ऑन से ही लेते हैं, कोई बात नहीं उसका। भिखारी सर इसमें सी बाई ए कोई फिक्स वैल्यू लिया था अपने वॉल्यूम चेंज करने के लिए, ए चेंज किया है सी बाई नहीं, सी बाई ए का रेशियो एक ही तरह से बढ़ा है सर, उसमें प्ले नहीं किया है सर हमने, सी बाई ए में प्ले नहीं किया है अभी। अब हम GAN के अंदर चले गए और वहाँ बैठते बैठते मैं इसका थोड़ा नेम चेंज कर देता हूँ, SCF12 डॉट इन लिटिल ऑकवर्ड नेम, सो लेट अस कन्वर्ट टू SCF डॉट इन ओनली। YUMB is the cut and paste, ओके। SCF12 डॉट इन को मैं नेम चेंज कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। YUMB SCF12 डॉट इन SCF डॉट इन। अब आपको क्या दिखेगा, SCF इन दिखेगा इसमें, और 12 लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, इसीलिए हटा दिया मैंने उसको। अब हमें फोन ऑन वाला फाइल चाहिए, PS डॉट इन। PS डॉट इन फोन ऑन में है, तो इसलिए मैं फोन ऑन फोल्डर से लेता हूँ इसको, एक ही फाइल है, इसको लाया। अब और आपको चाहिए Q2R डॉट इन भी चाहिए इसके लिए, वो भी ले सकते हैं इसी तरीके से। आप मेरे साथ करते रहिए, थोड़ा लैग होया था फिर बताना। CP स्पेस डॉट डॉट स्लैश फोन ऑन स्लैश Q2R डॉट इन स्पेस डॉट, लास्ट में वो डॉट जो है वो डेस्टिनेशन है। दैट मीन्स वी आर अंडर द GIN फोल्डर, सो आई एम पुलिंग दैट फाइल इनसाइड द GIN फोल्डर, ओके। वो फाइल भी आ गया। अब क्या चाहिए, रनर स्लरम भी चाहिए इसमें, है ना। इसमें थोड़ा चेंज करना है मेरे ख्याल से, और PS डॉट इन में भी चेंज करना है, देख लेते हैं उसको। पहले PS डॉट इन में, अब PS डॉट इन का एडिट करना है हमें। ऐसा करेंगे, पहले उसका मास थोड़ा इधर नोट डाउन करेंगे SCF से। इसका मास क्या है, एटॉमिक मास देख लेते हैं, आप भी याद कर लीजिए। ये दोनों मास 28.085 और दूसरा है 14.007, ठीक है। 28.085 14.007, ओके। इसी मास को उधर डालना है, इसमें चेंज करना है। अब 28 अच्छा 28 पॉइंट क्या था उसमें, 085, ये तो उसी का मास है, फिर सिलिकॉन का कैसे आ गया है? हाँ, ये सिलिकॉन, उधर क्या था, और दूसरा भी लिखना है ए मास 2 था 14.007, ये नाइट्रोजन का हो गया। गैलियम कितना था, फिर भूल गया मैं, फिर भूल गया, देख लेते हैं। अच्छा, ये तो गैलियम का रॉन्ग हो गया, मेरे ख्याल से पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा हमको। एक वेबसाइट है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ, मैं दिखाता हूँ, ph.in, सॉरी ptable.in, पता है आपको ये वेबसाइट बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हुआ है। ptable.com, ओके। इस एक ऑनलाइन पीरियोडिक टेबल है इस तरह का। अब हमें गैलियम का देखना है, गैलियम इधर है 69.723, ओके। वो फाइल में थोड़ा मिस्टेक है, देख लेंगे उसको, कोई बात नहीं, वो तो हम ऐसा ही कर दिया। 69.723 कॉपी कर लिया मैंने इसको, और अब इधर जाकर डालेंगे इसको, वो वैल्यू पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हो गया है ना। अब सिलिकॉन रखने का भी कोई मीनिंग नहीं है इसमें, इसको GIN कर देते हैं, GIN अब बन गया है इसका। और अच्छा, टॉपिक में भी थोड़ा चेंज करेंगे इधर भी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सिलिकॉन के एक टेम्पलेट से स्टार्ट करके, टोटली स्क्रैच नहीं किया हमने, टाइम सेव करने के लिए कुछ टेम्पलेट लिया और उसको थोड़ा बहुत
हैकिंग करके गैलियम नाइट्रोजन का फोनोन फाइल भी बनाया है, इसलिए इस तरह से। सूडो पोटेंशियल तो ठीक ही है, गैलियम नाइट्राइड का ही है उधर, SCF। सूडो पोटेंशियल SCF में चाहिए, इसमें नहीं, ठीक है। अब इसमें ना ये तो क्यूबिक नहीं है, हेक्सागोनल है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि टाइम सेविंग के लिए इस तरह से कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट में करेंगे हम काम। 4/4 तो नहीं है, लेकिन थोड़ा दिक्कत आता है इसमें, लेकिन इस तरह से करेंगे, देख लेंगे उधर SCF.in का हाल क्या है। इसमें रेशियो है, अच्छा इसमें भी बदल दो उसको, ठीक है, इसमें भी बदल दो। अच्छा क्या क्या था, 69.723, ओके, इधर भी बदल देने में अच्छा है। इधर 886 था इसका फोनोन्स, तो ऐसा ही करते हैं, 886 ही कर देते हैं उधर भी, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर प्रोपोर्शनल नहीं हुआ तो फोनोन कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा। या तो हम 443 कर सकते हैं टाइम सेविंग के लिए, 443 अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। चलो 443 करते हैं उसमें, क्योंकि ये तो उस डायरेक्शन में तो थोड़ा छोटा है। 443 इस तरह का होता है इसमें, जो क्यू पॉइंट के पॉइंट SCF.in में लगाता है उसी का प्रोपोर्शनल होना चाहिए इधर क्यू पॉइंट का ग्रिड भी। ओके ठीक है, आपका कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा है तो फिर 886 भी लगा सकते हैं। वो करीबन एक नोड में मेरे ख्याल से 3 दिन से ज़्यादा लगेगा, 3 दिन, उतना एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें 4 एटम्स है, इसलिए थोड़ी देर या आशीष। हाँ ओके ओके देन या ट्राई ऑल गॉन। Okay, then to take, I think, sitting may be little difficult. Okay, then what should we do? We missed that. Or let's try tomorrow then, if we can. Tomorrow तो आज नहीं खुलेगा फिर। टुमारो ट्राई करते हैं, फिर एक दिन ऐसा ही बैठते हैं इधर उधर। वी हैव टू वेरी स्विफ्ट, अदरवाइज इट विल बी गॉन। इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। कुछ या अच्छा हाँ सर, सीटिंग में कितने सीट है, 4 सीट है कि नहीं? कर देते हैं, हाँ कर देते हैं सीटिंग का, कोई बात नहीं। सीटिंग में मिलेगा ना, मिलने तो वो सीटिंग में वो जो जनरल डिब्बा है उसमें जो आदमी इधर बहुत वो करते हैं ना भीड़ भाड़, वो कौन सा डिब्बा है? सीटिंग में ही है ना वो भीड़ भाड़ वाला। क्या करें उसका? नो बस इज डिफ़िकल्ट। बस में अच्छा तो रेल में ही सीट के जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा वही ठीक रहेगा आशीष, उसी को कर दो प्लीज, डू दैट सीटिंग, नो ऑप्शन। लेट्स द किड एंजॉय सीटिंग। Yeah, do sitting quickly then, otherwise that will also go. Yeah, do the sitting. Hey, so overnight we will sleep and go, no worry. Ambala to Gorakhpur. Yeah, okay then, do the first one. Kirmi, that is going earlier, right? Okay, yeah, good. Yeah, let's do that. No choice.
I have to leave anyway. Yeah, okay, Ashish, yeah, thank you. Okay, at least I got a sitting seat, that's a good thing. Otherwise, I have to stay one more. Okay, so we made a phonon file for the gallium nitride with correct, and we also improved the SCF.in. Thank you very much for correction. Now let's see the Q2R.in if there is some amendment required. In Q2R also, only thing you can change is change silicon to gallium nitride. Okay, that is the thing you can change. Make it GAN. So we are done here. And 444 is here, but you make 443 because this is it is a Q grid information. Okay, although it is not mandatory, but it will give you a quick idea on what Q grid we are doing our calculation. Adhikari sir, how much Q points we should choose while calculating? Generally, half of the K grids are half. Do we need to check convergence with respect to Q points? Yeah. Phonon required, sir. Yeah, yes. But it is a very expensive to even check. So people practically don't know. Yeah, Ashish. Done? What is mine? At least, okay, 1310 73, 72. Yeah, October 13, yeah, 1972. July 1975. Give me 2 minutes, okay? 1975, yeah, 19 July 75. Yeah, all on your side preference, yes. Yeah, age too well, yeah. Or we can put birthday or just age is good for them. Birthday February 7, 2010. Yeah, 2010. Stuti November 1st, 2007. Yeah. First. 2007. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So I hope you have done these changes also here. Now let's go and make necessary changes if there be on the Rondat's alarm. Let me check. And here you definitely increase the time. Okay, time is not enough for this, and make it 12 hours. Although it may not be sufficient, but let's hope it is good. Or do 24 just to, in case safe, on the safe side, do 24. Okay, it is a very heavy calculation in fact, and this will give you a real, it is not a teaching purpose thing, okay, we are doing now. We are doing a real production work. So make it 24 hours. Or if you feel not enough, let's make it 72, that is the maximum on this normal partition, okay. So we change the time is 72, we decided that. And others possibly we don't need to change because, and Matt Dine. And for now, let us comment this all other sections except Q2R. All you need is force constant file that will be generated by the Q2R
instruction, and it doesn't take time also. So the DOS.in, band.in, you can pull that force constant file which will be generated according to the Q2R.in. You can bring that file locally on your machine, and everything can be run locally, okay? Only thing you cannot run is the PS.in. That is extremely long time. SCF also you can run. It is just 4 atom. It doesn't take more than half an hour on local machine also, local laptop also. But this is not possible in local machine. At least you have to commit weeks and weeks time for that 443 grid, okay? So we are mostly done. And particularly what I am skipping here is the DOS and band calculation. That can be done locally. All you have to save is the GIN443.fc file. That is very important to restore that file. If you have that file, every detailed information is inside that file. So you can do DOS, you can do band, anything can be done from that file. So Q2R.in will generate that file, and that is your kunji. सबका कुंजी वही है, DOS का, band का, और आगे जो भी करना है उसका कुंजी उसी में है. NK equal to 2 na, and NPW 6. हाँ. How do we choose these numbers? दिस नंबर इस तरह से होता है, जो एक नोड में हमारे उधर 12 स्कोर हैं, और 12 कोर्स के लिए आप कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं 6 NK और NPW में, जिनका प्रोडक्ट 12 होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है, कम भी नहीं होना है. कम होना है तो रिसोर्स वेस्टेज गया, बड़ी होने से ओवर सब्सक्राइब हो गया फिर रिसोर्स को. Is there some optimization in choosing these numbers? Generally, this is the best. 4, 3. Yeah, or 1 to 12 also can be done. At least NPW should be 4 minimum value. That is the minimum value for NPW. So we can choose 3, 4. Yeah, 3, 4 also can be chosen. Yeah. Or does it affect time? 1 to 12 also can be done, and generally 2, 6 is the good combination. Okay. 2, 6 is good combination for this. Or if you want, let me show you one crazy thing. This is also possible because there are up to 5 nodes, and I have fully reserved the resource. This is a quick method, although it is a very big hammer. You are running on 60 cores. So I recommend you go this way. Let's do this thing. Completely change. Just a minute. This is a luxury job. Yeah, luxury job, yes. Yeah, Ashish. Okay, yeah, thank you, Ashish. Yeah, bye. Yeah, okay. Okay, if you do this luxury thing, it is a class A ticket for supercomputer, and do this here 10, and here also 10. And this one doesn't take time, so in case if you are, at least grab 12 cores for this. Okay. So if we don't put these numbers, how would that affect the things? By default, what are the values of these numbers? There is 10 अगर मैं नहीं डालता हूँ. There is no default, sir. We have to write those values. अच्छा. We actually use directly MPA minus NP number of processor. नहीं minus NP 60 डाला, NK 10 नहीं किया, NPW 6 नहीं किया तो चलेगा? नहीं सर, चलेगा सर. नहीं चलेगा. वो तो रखना ही है, NK और NPW तो रखना ही है. Okay. नहीं तो वो सारे कोर्स में NPW का ले देता है 60, और वो बहुत इनफिशिएंट कैलकुलेशन होता है फिर. Okay, that is not time efficient. हाँ, ज़्यादातर क्वांटम एस्प्रेसो बोल रहा है कि 16 से ज़्यादा मत रखो NPW में. मैक्सिमम यू कैन गो 16 कोर्स. हमने क्या किया इसमें, NPW का 6 रख लिया और NK का 10 कर दिया है. इसका भी प्रोडक्ट तो 60 आएगा. और ये सबसे बेहतरीन आइडिया है. 5 इसमें ना होल सुपर कंप्यूटर को जितना भी नोड रिजर्व किया हूँ मैंने, वो सारा एक ही जब लेता है. एक टाइम में एक जब रन होता है, बाकी सब क्यूब में बैठता है, और जब वो ख़त्म होता है फिर वो क्यूब का दूसरा नंबर का टर्न आता है. इसी तरह से होता है. लेट अस डू सम बिग थिंग आल्सो सो दैट यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ सुपर कंप्यूटर. ओके, मेक योर रनर स्लरम फॉर गैलियम नाइट्राइट विथ 60 कोर्स. दैट इज द मैक्सिमम नंबर you can go, because you should write the necessary changes is here. Capital N is 5, small n is 60, small n is the total number of CPU, because in our case one node has
12 CPUs, so 12 5 just 60. And if you do that, 72 is not required definitely, I am sure here. Okay, 72 is not required. But let us keep 72 to be safe. And module load is same thing as is. And MPI run, you are running on 60 cores with this. And PS.in, you are running on 60 cores. Q2 are not required that much. Just 12 is more than enough for this, okay? If you do 60, your calculation will slow again for particularly Q2R. Because you can run that Q2R also in your laptop by bringing all the data. But it is recommended to run Q2R on supercomputer only because you don't need to pull all other file from there. You only need that force constant file. Which file is that? Let me show you. This file gin443.fc, that is सबका कुंजी उसी में है. सभी फर्दर कैलकुलेशंस का कुंजी इसी फाइल में छुपा हुआ है. सिर्फ इसको तानना है. इसीलिए Q2R रन वहीं रन कराना है और इस फाइल को लेना है. और आप डॉस फोन सभी इसी में, सॉरी डॉस और बैंड इसी में लोकली भी कर सकते हैं. उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ये फाइल है तो. ये फाइल है सबसे महत्वपूर्ण फाइल अपने फोन के लिए. इस फोन का क्रीम यही फाइल है जो फोन को हम मत रहे हैं. इसका क्रीम यही है. ओके, आई विल नॉट सबमिट जॉब, यू कैन सबमिट जॉब. सो होपफुली एवरीथिंग. सूडो पोटेंशियल का पाथ चेक कर लें एक बार, क्योंकि जॉब ज़्यादा टाइम लेने वाला है. अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो फिर आप लाइन के सबसे पीछे वाले उसमें जाएंगे. So we have to change the name of dynamical matrices in QR2.in. There it was written as .dyn. किसमें? Q2R. कि Q2R में देख लेता हूँ फिर. हाँ सही बात है. हाँ gin.dyn. अच्छा, इसमें भी चेंज करना है सही, क्योंकि OPS.in में भी चेंज. हाँ, OPS.in में कौन सा था डाइन फाइल, उसी को रखना है उसमें. हाँ, थैंक यू. वहाँ से रीड करेगा डायनामिकल मैट्रिक्स. हाँ, ये डायनामिकल मैट्रिक्स उधर से रीड करेगा और इसको ये बनाएगा. ऐसे करोगे तो एरर आएगा. सो आई मीन यू कैन फिक्स द एरर्स. आपको समझ एरर्स पढ़ने हैं कि क्या एरर दे रहा है. वो बोल सकता है कि si.dyn नॉट फाउंड, कुछ ऐसा बोलेगा. हाँ. तो इस तरह से आप डीबग करोगे. कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़ी लगने लगती है कि हो ही नहीं, पता नहीं कहाँ से फाइल, कौन सी फाइल मिसिंग है. सो रीड देम आउट और उस हिसाब से फिक्स कर सकते हो. और देयर इज वन मोर ऑप्शन आल्सो. इफ यू डू नॉट लाइक टू रन Q2R also in supercomputer, because although it doesn't take, you can pull all the dyne files locally. Okay, bring those dyne files and you are good. Basically cream मैंने थोड़ा आगे गलत कर दिया. इसका cream है और dyne files. सबसे एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग कैलकुलेशन है डायनामिकल मैट्रिसेस कैलकुलेट करना, डाइन फाइल जो सर. हाँ, उसके बाद फिर आपका हो जाता है. हाँ, Q2R भी आप लोकली कर सकते हैं अगर वो फाइल उधर से मिला तो, सुपर कंप्यूटर से मिला तो. ये बात है इसका. अगर वो उसमें ना कितना बनता है वो ग्रिड के मुताबिक होता है. जैसा 443 में करीबन 8-10 इतना ही बनता है, लेकिन उसका होता है 4-4-48. अगर कुछ भी सिमेट्री नहीं हो तो 48 डाइन फाइल्स होता है उसमें. लेकिन सिमेट्री की वजह से वो थोड़ा कम हो जाता है, और कितना कम हो जाता है वो रन करने के बाद ही पता चलेगा. ठीक है. अब सूडो पोटेंशियल देख लेता हूँ मैं SCF.in में. सूडो पोटेंशियल का पाथ क्या दिया है मैंने इसमें, ./sudo. आप ये यकीन करें कि आप इसमें जब ./ करेंगे ना तब सूडो फोल्डर देखना चाहिए. है सूडो फोल्डर? अच्छा, मेरे में तो नहीं है. चलो, मैं तो लोकली कर रहा हूँ ये काम, सुपर कंप्यूटर में ही नहीं कर रहा हूँ. ये पता लगाना है आपको. जब वो फोल्डर से ./ करेंगे तो सूडो फोल्डर देखना चाहिए. अगर नहीं दिखा तो फिर जहाँ से है उससे फिर ग्रैब करके लाना है. लेकिन आपने हिमाचल में बनाया है ना, तो अब ये पुराना क्लोनिंग है इसलिए इसमें नहीं है. अब फ्रेश क्लोनिंग में सभी में है सूडो फोल्डर, कोई बात नहीं. अब उसमें पता करें कि वो गैलियम और नाइट्रोजन का सूडो पोटेंशियल है. देख लेते हैं एक बार सुपर कंप्यूटर में जाकर भी, अगर मैं इसमें हूँ तो. हाँ, मैं अभी मेरे लोकल फाइल इसमें कॉपी कर देता हूँ. इसमें सूडो फोल्डर है ऑलरेडी. चलो, इसके अंदर जाकर एक बार ज़रूर देखना है इसमें है कि नहीं वो दोनों सूडो पोटेंशियल. अच्छा, इसमें नहीं है, देखो है ना, इसमें तो नहीं. एटलीस्ट ये पुराना क्लोनिंग होगा इसलिए नहीं है.
जो डे 3 वाला और उसके बाद में सभी में होगा। मैं एक बार जाके देख लेता हूँ, क्योंकि वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके हिमाचल में होगा। हाँ, इसमें है, गैलियम और नाइट्रोजन दोनों का है इसमें सुडोपोलिस में। चलो हो गए बात। अब मैं इधर उसको ले आता हूँ, ये कौन सा है। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल से दिखाता हूँ फिर एक बार, जो हमने किसी दिन किया था इधर। अब ये मेरा पाथ है, लेकिन सूडो नहीं डालना है इसमें। चलो इससे बाहर निकलते हैं। ओके, मैं इस लोकल में हूँ इधर, जिधर मैंने GAN का बनाया था फोल्डर किसी तरह से ना। हाँ, मैं क्या करता हूँ, ये सभी फाइल्स को सुपर कंप्यूटर में डाल देता हूँ SCP कमांड से। SCP स्टार, स्टार्स का मतलब होता है सभी जितना भी है वो सब लेके जाओ। इस तरह से GAN फोल्डर में मैं ले जा रहा हूँ सभी फाइल्स को। अच्छा, उसमें GAN नहीं है, डे 3 में GAN नहीं है। तब तो मैं क्या करता हूँ कि GAN फोल्डर को ही उधर भेज देता हूँ। चलो SCP, उसमें GAN फोल्डर को भेजने के लिए -R ऑप्शन चाहिए मेरे को। ठीक है, अब मैं इधर भेज रहा हूँ GAN फोल्डर को। इसमें ज़्यादा तो कंटेंट नहीं है, सिर्फ 2-4 टेक्स्ट फाइल है, चला गया है ना। अब मैं इधर देखता हूँ कि वो कंटेंट पॉपुलर हुआ कि नहीं। यस, अब मेरा सारा कंटेंट आ गया है इसमें। सूडो के अंदर वो फाइल्स भी है गैलियम और नाइट्रोजन का। तब तो मेरा बात हो गया। अच्छा, किसी का हुआ कि नहीं रन? अभी वो एक बंदा का कैलकुलेशन है रेगुलर यूजर, मैं अच्छा वो तो होल्ड में चला गया। अच्छा, अब ना हम क्या करेंगे, अच्छा GAN का ओके ठीक है, मैं ही सब सबमिट कर देता हूँ कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 64 में ये आसान से हो जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है। अब ये जो सभी रन्स है, ये पुराना वाला रन, ये ख़त्म होने के बाद मेरा अभी क्यू में चला गया ऑब्वियसली, है ना। ऐसा करते हैं, इस कैलकुलेशन को ना मैं कैंसिल करता हूँ, और अब इसमें फोनोन नहीं लिखता हूँ, मैं GAN लिखता हूँ इसमें, ताकि पता चले कि ये क्या कर रहे हैं। और जब आप थोड़ा, जब सबमिशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तब आप कैंसिल भी कर सकते हैं अपना। जब मैं दिखाता हूँ, यस कैंसिल है इसका कमांड, यस कैंसिल करना है। उसके बाद जॉब का ID देना है। मेरे जॉब का ID कौन था, 6958 है। किसी दूसरे के जॉब नहीं आप आई थिंक कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई दूसरों की जॉब कैंसिल करके हाँ, अपना चलाएगा। वो तो पूरा, जब आप अपने फ्रेंड से गुस्सा हो जाए तो सुपर कमेंट जाके उसका जॉब सारा कैंसिल कर देते हैं। हाँ, वाले यहाँ सुपर यूज़र कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को गुस्सा मत बनाना। मैं या तो क्यूब का जॉब भी कैंसिल कर देता हूँ और रनिंग जॉब भी कैंसिल कर देता हूँ फिर। अच्छा, हो गया। अब देखते हैं क्यूब में फिर है कि नहीं, है ना। क्यूब से मेरा जॉब चला गया। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ रंडर स्लवर में, सिर्फ जॉब का नाम चेंज करता हूँ और कुछ नहीं। इसमें वो फोनोन के बजाय मैं GAN कर लेता हूँ इसमें, ताकि पता चले गैलियम नाइट्राइड का काम हो रहा है। इसमें ना एक चक्कर भी है, मैं बताता हूँ। ये तो पब्लिकली भी, जो भी सुपर कंप्यूटर का SS है, वो जब SQ करेगा तो आपको वो जॉब दिखाई देगा, जॉब का नाम। आप क्या कर सकते हैं कि अपना सेक्रेसी रखने के लिए, जैसा कि कोई क्रिटिकल पब्लिकेशंस होता है, दूसरों को आइडिया और दूसरों ने फिर छीन लेता है वो। अच्छा भाई, ये तो इस तरह के कैलकुलेशन कर रहा है, उसको पता चलेगा कि वो आप किस टॉपिक में रिसर्च कर रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो जॉब का नाम आपने पूरा
ओपनली दे दिया इधर, है ना, जब जैसा मैंने GIN दिया ना, अब दूसरों को पता चलेगा हाँ भाई ये तो गैलियम नाइट्राइड में काम कर रहा है, और वो दूसरे क्या करता है कि जल्दी जल्दी फिर ये जब करता है इसमें, और वो आगे पब्लिकेशन उसका आता है फिर इसलिए आपको फिर हाँ हिमाचली नेम्स कुछ भी दे दो कुमारी बिलासपुर। हाँ, ये अपना डेस्कटॉप का ऑर्केस्ट्रेशन जैसा नहीं है, क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्स है, इसमें थोड़ा सावधानी बरतना यूजर का अपना ही काम है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हाँ अब ट्रेन में सवार करना और अपने ही प्राइवेट कार में सवार करना में जितना डिफरेंस है ना, वैसे ये तो ट्रेन है, सभी को लेकर चलता है, लेकिन यात्रुगण अपना लगेज का सामान खुद करें सुरक्षा खुद करें। ओके, अच्छा, आई मेड द नेसेसरी चेंजेस, लेट्स सबमिट द जॉब अगेन। अब मेरा जॉब मेरे ख्याल से दिखेगा इधर। ये हिमा 39 का क्या चक्कर है, ये तो 51 मिनट हो गए, अभी रन हो रहा है। कौन है हिमा 39? क्यू पॉइंट्स बढ़ा दिया। अच्छा, इसमें 60 क्यों चलाया, क्या 60 लेके चलाया? तब वो कोर किए में कोर तो 12 ही होगा। क्या चीज? क्या किया हुआ? लास्ट मिनट का नहीं, क्यों ना इसी एक जॉब की वजह से रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो रहा है सभी को। उड़ा दो सर। सर आप गुस्सा कर रहे सुपर यूजर से मैं बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कोई स्टॉप कर दो। हाँ अभी मैं स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि नहीं तो 15 मिनट में सभी जॉब चला जाएगा नॉर्मली। इसको अभी रोकते हैं, आप बाद में कर सकते हैं, वर्कशॉप के बाद भी टाइम है, 1 मंथ के लिए है। अभी अप्रैल है ना, अभी मई 29 तक है अपना अकाउंट उधर सुपर कंप्यूटर में, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा ये ट्रेनिंग अकाउंट। अगर किसी को फिर से मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला था और कोई और दूसरे में भी जो है मुझे 1 और मंथ बढ़ा दो, इस तरह का कोई है तो फिर ईमेल कर देना वो HPC वाला अकाउंट में। हाँ, सेपरेटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं फिर उसको रिवाइव करता हूँ, नहीं तो वो डीएक्टिवेट होता है अपने आप 1 मंथ के बाद, ठीक है। किसी को भी उस तरह का ज़रूरत है, लेकिन ट्रेनिंग अकाउंट को ना ये ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स ना लें, सिर्फ सीखने के लिए यूज़ करें उसका। हाँ, इसलिए मैंने अब हिमा 39 कैंसिल कर दिया, ठीक है हिमा 39 इधर नहीं है, ओके ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तब हिमा 39 कौन सा है? 6931 ठीक है, मैं कैंसिल कर दिया ये जॉब। अब सिर्फ एक ही जॉब है हिमा 6 का, वो तो आसान से कट जाएगा 15 मिनट में। अब ये दोनों जॉब जो रेगुलर यूजर्स के हैं, मैंने इसको होल्ड में रख दिया पहले से ही, क्यू में आने ही नहीं दिया इन दोनों जॉब को। और जब हिमा का जॉब चला जाएगा तब मेरा बारी आएगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद मेरे ख्याल से 1 घंटे में तो हो जाएगा, देख लेते हैं। 60 है तो शायद जल्दी हो। हाँ जल्दी हो जाएगा, देख लेंगे सर, ये ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। If you have to realize the need for supercomputer and power of supercomputer, तो ये जॉब अपने लैपटॉप पे ट्राई करना एक बार, फिर देखना कितना समय लगता है, and then you try it here. So इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। फोनोन कैलकुलेशंस स्पेसिफिकली आर वेरी एक्सपेंसिव, एवरीबडी कांट अफोर्ड, बिकॉज नॉर्मल कंप्यूटर्स पे बहुत लंबा समय लगता है इसको। दोस डायनामिकल मैट्रिसेस टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए आपको सुपर कंप्यूटर या अच्छी पावर के कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं।
बेसिक बैंड स्ट्रक्चर यू कैन डू एनीवेयर ऑन एनी लैपटॉप, मतलब मोस्ट मटेरियल के लिए वो चलेगा। फोन सबसे रिसोर्स सबसे ज़्यादा इंटेंसिव है वो, फोन। बहुत वक्त लेता है उसको। जब But फोन these are worth doing calculations. They tell you a lot about material things. हाँ, बहुत सारे प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड होती हैं। और इसका ना एक थोड़ा जुगाड़ भी है, जैसा डिस्पर्सन ना करके फोन में सिर्फ एक ही पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा पॉइंट में, उसे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसा कि लोटो गैप तो उसी पॉइंट में देखना है हमको, ठीक है, और लोटो गैप देखने के लिए पूरा स्पेक्ट्रम में इतना सारा, हाँ स्टेबिलिटी भी देखना है, हाँ गामा पॉइंट काफ़ी है। अगर उसमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आया तो समझ जाना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। अगर नेगेटिव आता है किसी भी मटेरियल का, जीरो से शुरू हो रहा है ना फोनोन डिस्पर्शन कर्व, किसी भी मटेरियल की अगर नेगेटिव में जा रही है इट मींस वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ है या वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ये भी एक जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि लोगों ने कई बार गलत एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने स्ट्रक्चर रिपोर्ट करे, तो लोगों ने जब फोनोन कैलकुलेशन किया तो उनको लगा इसमें तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मीन दिस स्ट्रक्चर मस्ट नॉट बी स्टेबल थियोरेटिकली। जब वो लोगों ने बताया, देन दे ट्राइड टू लुक फॉर द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड देन लेटर ऑन इवन एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स रियलाइज्ड कि करेक्ट स्ट्रक्चर यही होना चाहिए था जो थ्योरी से आया। तो इस तरह से आप अच्छे मतलब नए काम कर सकते हैं। चला सर जॉब आपका देखिए। नहीं सर, अभी उसमें है, अभी 10 मिनट, अभी 5 हिमा 22 भी आ गया कोई? हिमा 22 तो GPU 1 में है सर, कोई बात नहीं, ये वॉल्यूम ऑप्टिमाइजेशन का है। चलो हाँ, ये होगा। अब जब हिमा 6 का खत्म हो जाएगा तब ये आएगा हिमा बारी। 6 लगाया क्या है हिमा 6 में? किसका अकाउंट है हिमा 6? कितना? आपका है क्या कैलकुलेशन? यही फोन नहीं लगाया आपने? गैलियम नाइट्राइड मतलब कौन सी कैलकुलेशन लगाई है? सिलिकॉन का फोन? अच्छा, कितना टाइम लगता है सिलिकॉन वाले का? सिलिकॉन वाला का भी 15 मिनट तक होता है और सर। कितना उन्होंने वो कितने आपने वो लिए हैं नोड्स एंड कोर्स? एक ही नोड है सर, C नोड 3 में रन हो रहा है वो। हाँ, 10 मिनट 11 मिनट को हो गए, अब 4 मिनट का बात है सर ये। अच्छा। अब मुझे ना ये बता देना है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस होगा है फोन का काम करने में। क्या आप अब इससे आगे बढ़ सकते हैं अपने आप में कि नहीं, ये बात है सबसे अहम बात। अगर आपको कोई मटेरियल दिया जाए, ओके, आई मीन वी कैन गिव देम एक्सरसाइजेस, एक महीने का काउंट है तो हाँ, यू कैन अगर आपने सच में ही ये चीजें अभी जो 4 दिन में आपने किया है इसको और पक्का करना है और अच्छे से सीखना है। सर ने आपको 1 मंथ का काउंट दिया है, यू पिक समथिंग लाइक 5-6 क्रिस्टल्स उठाइए, डायमंड उठा लिया, NaCl उठा लिया, कुछ भी 4-6 क्रिस्टल, और उन सबके बैंड स्ट्रक्चर्स, फोनोन डिस्पर्शंस, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, वो सारे कैलकुलेट करिए। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो वो रिजल्ट्स आते हैं उनको आप एक छोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तौर पे सबमिट भी कर सकते हो या कंपाइल कर सकते हो। देन दैट विल बी इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बनाते हो दैट विल बी प्रूफ कि आपने कुछ किया है और आपने प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से सीख लिया है। अदरवाइज अभी जो किया भूल जाओगे आप 4 दिन बाद, तो अगर फिर से 4 दिन बाद ट्राई करोगे यू कांट रिमेंबर दीस थिंग्स इजीली, है ना? तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही आपको फायदा होगा इसका। आई थिंक मैं टी ब्रेक का देखता हूँ कि हाँ ठीक है सर। 1 घंटा जब तक ये करेगा तो टी भी हो गया हाँ चलो। show you a shortcut for phonon, okay, shortcut। एंड इसका ये फायदा है कि आप GPU में भी चला सकते हैं ये।
मैं इसको भी दिखाता हूँ क्योंकि उधर हमारे पास कंप्यूटर है। जीपीयू में करके देखते हैं ये फोन ऑन, इसी का फोन ऑन जीपीयू में करके देखते हैं। क्या करना है कि आपको फोनो पी है एक कोड PHONOPY फोनो पी। फोनो पी जैसे कि आप फोनो पी स्पेस क्वांटम एस्प्रेसो करके सर्च कर दीजिए और ये दूसरा लिंक है इसमें मेरे ख्याल से। थ्री लाइट्स वो 3 लाइट्स ऑफ कर देना है और मेरे ख्याल से ये भी अच्छा रहेगा। वो हो गया। अब ये वाला भी ये भी कर दो। वो लास्ट स्विच एक ही बचा है, वो कौन सा? अंदर होगा, इसके पीछे होगा। नहीं, इसके पीछे है सर, इसके पीछे। हाँ, इसके पीछे है। हाँ, चलो हो गया। Okay, now let us go to the second link if you are able to see it. थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं। ये ना जो इतना ज़्यादा कंप्यूटिंग एफोर्ड नहीं कर सकता उसको एक शॉर्टकट रास्ता इधर से है, मैं वही दिखा रहा हूँ आज। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। Okay, let me maybe you can study this on your own. I have to go with Arun sir for a while. Okay, so please read this and we will discuss this in a WhatsApp group or something like that. So इसमें भी एक क्या दिखा है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल है इसमें। बहुत बारीकी से किया हुआ है इसमें एक्सप्लेनेशंस, आप एक बार पढ़ के देख लीजिए। ये क्वांटम एस्प्रेसो का ही इनपुट फाइल है इसमें और फोनोन गामा में किया हुआ है। एक बार इसको देख लीजिए आप, ये वाला लिंक मैं व्हाट्सएप में किसी से ना कंप्यूटर में है तो व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए ये लिंक को। इस कंप्यूटर में व्हाट्सएप है नहीं, इसीलिए नहीं कर सकता मैं। उसमें करने से सारा यूजर्स को आसान हो जाएगा पकड़ने में ये लिंक को। बैकग्राउंड में ना वो पोस्टर लगा देते हैं। अच्छा हाँ सही, रिकॉर्डिंग भी पॉज करते हैं।